Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome back on your favorite YouTube channel for the preparation of IPMAT and JIPMAT examination. We are IPMAT Wallah, and friends, in this series of sessions, we are helping you to build up your fundamentals, your foundation for the preparation of IPMAT and JIPMAT examination. So friends, a very warm welcome to all of you. जल्दी से प्लीज एक बार कंफर्म कर दो if I am clearly visible and audible to each and every one of you so that we can start off with this session. Yes, people. So can you all please quickly confirm if I am clearly visible and audible to every one of you? जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे दो. ऑल क्लियर, परफेक्ट काव्या, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. ऑलराइट रुचि, मंगल, एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. राइट नाउ फ्रेंड्स, लास्ट क्लास जो हुआ था फाउंडेशन का, इन दैट क्लास वी हैव कवर्ड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड दैट वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. राइट Now, in that session of data interpretation, we discussed the basics of data interpretation and we discussed two different type of data sets. अगर आपको याद होगा तो हमने line charts and bar graphs, ये दो different type of data sets discuss किए थे. And हमने एक set of questions solve किया था जिसमें line charts थे and another data set हमने solve किया था जिसमें bar graph था. Right? Now friends, today in this session we will continue from where we have left in the last class. तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट, यस, कैन यू ऑल टेल मी, डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज्यादा डर हमें किस टाइप के डेटा से लगता है? कैन यू गो अहेड एंड गेस इट? सो प्लीज पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स कि डेटा इंटरप्रिटेशन में डिफरेंट वेज होते हैं, डेटा जिस तरीके से गिवन होता है, तो सबसे ज्यादा डर आप लोगों को किस टाइप के डेटा सेट से लगता है? कम ऑन टेल मी. बार ग्राफ, टेबल्स, लाइन चार्ट, ऑलराइट, एनीवन एल्स? सो लाइन चार्ट में डर लगता है. लाइन चार्ट हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द टुडेज एजेंडा. और इनमें से कौन से वाले डेटा सेट से हमें डर लगता है? So one of the data sets that we have not covered in the last class is pie chart. So today we are going to talk about pie charts, right? So when the data is given in the form of pie chart, so first of all we'll be looking at the basic concepts of pie charts. Pie chart किस तरीके से given हो सकता है? Pie chart में जो भी values होती हैं उनको हम किस तरीके से read करते हैं? So on so forth, and then we'll have a look at one set of questions on pie charts. Now जो हम set करने वाले हैं, again that will be a basic set on pie chart that will give you like a basic idea how to deal with the questions of pie charts. जो एक set करेंगे हम, it will have 5 questions, so we'll be solving one set of 5 questions which is based on pie charts. All right, ठीक है? So friends, let's क्विकली स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ पाई चार्ट. पाई चार्ट के बेसिक्स क्या होते हैं? पाई चार्ट सबसे पहले गिवन किस तरीके से होता है, राइट? सो बेसिकली व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ पाई चार्ट? पाई चार्ट ये जो वर्ड है ये कहां से आया? सो पाई चार्ट, पाई, PIE. सो कैन यू रिलेट दिस पर्टिकुलर थिंग पाई अदर देन डेटा इंटरप्रिटेशन? कोई और चीज आती है दिमाग में ये जो वर्ड है पाई सुन के, अदर देन डेटा इंटरप्रिटेशन, अदर देन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स के अलावा और कहीं पे आपको ये वाला वर्ड कुछ स्ट्राइक करता है आपके दिमाग में? सो रुचि, ये तो मैथमेटिक्स ही हो गया ना, पाई का वैल्यू 3.14. सो अदर देन मैथमेटिक्स, पाई चार्ट, पाई, ये जो वर्ड है पाई, कुछ और किसी और चीज की याद दिलाता है आपको? All right, Ruchi, very good. Food, yes, you can say that apple pie. सबसे कॉमन जो वर्ड हमारे दिमाग में आता है एप्पल पाई, राइट? और अ पीस ऑफ अ केक, राइट? सो ये जो पाई है ये वाला वर्ड वहीं से ही आया है, राइट? सो लेट्स से दिस इज अ कंप्लीट पीस ऑफ केक ऑफ एप्पल एंड वी आर डिवाइडिंग. एप्पल केक है, कोई भी केक है, एप्पल पाई केक है, राइट?
and we are dividing it into different pieces, or we can divide it in different pastries. Okay, so इस पूरे के पूरे राउंड केक को मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, नॉट नेसेसरली इक्वल पार्ट्स. ओके, एंड दीज डिफरेंट पार्ट्स फॉर्म द पाई. ओके, सो ये वर्ड वहां से यूज हुआ है. पाई चार्ट इस तरीके से हम बनाते हैं व्हेन वी डिवाइड अ कंप्लीट सर्कल इन डिफरेंट पाइज. मैथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली वी कॉल इट सेक्टर्स. हम एक पूरे सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ द पाई चार्ट इज ड्रॉन. ओके, अब पाई चार्ट में जो वैल्यूज हैं वो दो डिफरेंट तरीके से गिवन हो सकती हैं. One is the values can be given in the form of percentages. Okay, so first way the data can be given, it can be given in the form of percentages. Okay, so let's say this entire pie chart shows the percentage of marks scored by 5 different people, or this pie chart shows the breakup, the percentage breakup of the population of 5 different countries, or it can be anything. So basically the pie chart will give you the percentage breakup of different parameters, different people, different countries. So मुद्दे की बात यह है, जो भी values given होंगी, all the values will be in the form of percentage, right? Now percentage का total कितना होता है? Total is 100%, right? So total of percentage is 100%. So this 100% will now be divided among these different pies. Okay, ठीक है? So let's say we have A, B, C, D and E. These are 5 different countries, right? And this pie chart will give you the population breakup of these 5 different countries. Okay, right? Now let's say A is 10%, B is 20%, C is 30%, D is 15%. All right. So can you find out first of all the percentage breakup of E? So A, B, C, D का percentage breakup given है. Can you quickly tell me what will be the percentage breakup of E? E का कितना percentage होगा? जल्दी से बता दो. Come on, everyone, quickly. What will be the percentage breakup for E? E के लिए कितना percentage breakup होगा? Now Anu says 35, Ruchi says 25. यार ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. हाँ, total percentage is 100. A is 10%, B is 20%, C is 30% and D is 15%. तो अगर मैं इन चारों वैल्यूज को ऐड करता हूं 10, 20, 30 and 15, तो 60, 70, 75. 75% is covered among A, B, C and D. 75%. तो अगर 75% is already covered among these four, remaining 100 minus 75, that is 25% will be the percentage breakup of E. ठीक है? So percentages में सारी values given है, and you are also given that the total population of these 5 countries, ठीक है? So I'm talking about only these 5 countries. The total population of these 5 countries is given as, अब ये भी given है, let's say 350 million. Okay, so total population of these 5 countries is given as 350 million. So now this complete value, total value 350 million is divided in 5 different parts, and these parts are, or these countries are A, B, C, D, E with their percentage breakup, right? Now with this much information, will you be able to calculate the population, the respective population of each of these 5 countries? Calculate कर पाओगे या फिर नहीं? So if you can calculate, then tell me what will be the population of country D. Country D का population कितना होगा? Come on, tell me.
What will be the population of country D? D का population कितना होगा? Total population is given as 350 million for these 5 countries. All right, Ruchi says yes, she'll be able to calculate. Wonderful. Yes, definitely Hitesh, I am इंदौर में ये टॉपिक डेफिनेटली आ सकता है. ओके, सो कंट्री डी का परसेंटेज ब्रेकअप कितना है? 15%. सो कंट्री डी का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? इट विल बी 15/100 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन. सिंपल वर्क ऑफ परसेंटेजेस. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? 15% ऑफ 350 कैलकुलेट कर लूंगा एंड वो मेरा आंसर हो जाएगा. राइट? ठीक है. So what is the value that you guys are getting? So Hitesh has given the answer 52.5. Anyone else who can do the calculation and tell me the answer? 15% of 350. Yes, anyone? 15% of 350. Can you give me the answer? All right, so 52.5 calculate करो. 350 का 15% 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. यहां पे 5 कैंसिल कर देंगे 2. So 35 into 3 that is 105 divided by 2 which comes out to be 52.5 million. Okay, so population of country D will be 52.5 million. Yes, this is the answer. All right, ठीक है. Fine. So this is one way in which data can be given in case of pie charts, right? The data can be given in the form of percentages. Okay. So now based on this logic, this way of giving you the data, let's have a look at one complete set of data interpretation which is based on pie charts in which the values are given in the form of percentages. Okay. So let's handle this question. So this is the complete direction set. All of you have a look at this. This is the complete direction set that is given to you. Read each and every information that is given here. I'll give you 2 minutes to analyze this data and then I'll take you to the questions one by one. These questions will be based on the data that you can see on your screen right now. So question says that the following chart shows the share of different products in the total sales of XYZ company. The company sold 15,000 items in the year 2005. Come on, jaldi. The following pie chart shows the share of different products in total sales of XYZ company. Done. The company sold 15,000 items in the year 2005. अब ये जो breakup का है 15,000 ये total भी given है हमें, right? And this 15,000 is divided in 5 products. 5 products A, B, C, D, E. And इनका percentage breakup given है, right? So if you are clear with this data, please post done in the chat box. I'll take you to the questions. रुचि एंड हितेश प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो अपनी स्क्रीन. एवरीथिंग विल बी फाइन. ठीक है.
All right, people. So you are done with the analysis of data. Are you done? ठीक है. So I think there is some problem in YouTube. YouTube में कुछ problem है because मेरी तरफ से तो reception एकदम सही है, right? So we shall continue and let's have a look at this data first of all. तो कंपनी ने कितना सेल किया है? कंपनी has sold a total of 15,000 items which are divided among 5 different products. Product A, B, C, D and E. Product A का percentage breakup है 15%, then product B 35%. Product C is 20%, D is 12 and E is 18%. Right? Now to start with, there is no need to convert all these percentages into numbers. इनको numbers में convert करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है? So leave them as it is. इनको as it is छोड़ दो and depending upon the questions, we will do the conversion. ठीक है? तो there is no need to divide 15,000 in these percentages at the beginning of the question. क्वेश्चन में जब भी रिक्वायर्ड होगा हम उस परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है? राइट? चलिए. So let's have a look at the first question which is based on the data that you have seen. The first question now on your screen here. So all of you, what is the total sales of product C? Product C का total sales कितना है? You will have to find out. You are given 4 options. Option A, B, C and D. Wonderful. Quickly finish it off. जल्दी से. What is the total sales of product C? Product C का total sales कितना है? Now we know that what is the total sales of the entire company? पूरी कंपनी का total sales कितना given था? 15,000. Right? So 15,000 is the number that will be divided among these 5 different products. Right? अब यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट C का बात करता हूं, प्रोडक्ट C, the breakup is how much? 20%. So we can say that for product C, the total sales will be 20% of 15,000. Now 15,000 का 20% calculate कर लो and that will be the answer. Now orally calculate कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है calculations को. 20% calculate करना है 15,000 का. So if I look at 10% of this number, 10% of 15,000 कितना होता है? It is 1,500. 10% will be 1,500, तो 20% उसका double हो जाएगा. So 20% will be double of this, that is 3,000. Okay, so the answer of this question will be option C, that is 3,000. ठीक है? So 3,000, that is option C will be the correct answer. Okay, chaliye. Now let's move on and look at the next question. The next question, question number 2 on your screen. What is the ratio of the sales of product B to the sales of product E? You just have to calculate the simple ratio of the sales of product B to the sales of product E. Which option is correct? All right, Ruchi, very good. Anyone else? सर ये मंडे वाली क्लास है क्या? फनी वीडियोस, व्हाट डू यू मीन बाय मंडे वाली क्लास? नहीं यार, ये वाली जो क्लास है, दिस इज लाइक वी कंडक्ट दिस क्लास एवरी वीक ऑन वेंसडे. सो ये वेंसडे वाली क्लास है, मंडे वाली क्लास नहीं है. All right. Now here we'll have to calculate the ratio of the sales of product D and product E. Now दो तरीके हैं इसको calculate करने के. Now one way is you calculate the value here. Product D. Product D कितना percentage है? 12%. So you calculate 12% of 15,000. Now 15,000 का 12% कितना होगा?
कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करो, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 1800. ओके, नाउ सिमिलरली प्रोडक्ट ई, आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ई. सो प्रोडक्ट ई का परसेंटेज कितना है? 18%. ओके, सो 18% ऑफ 15,000. ठीक है ना, 15,000 का 18% कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पे ये वाला जो वैल्यू है ये कितना आया है? 1800. 15,000 का 10% होता है 1500. तो इस चीज को जल्दी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ठीक है, यहां पे इतना हेल्पफुल नहीं होगा ये, बट इन केस यू वांट टू कैलकुलेट, सो 15,000 का 10% will be 1500. Okay, then 1% will be 150, 2% will be 300. So 2% will be 300. If I'll add these two, I'll get 1800. Done. In the similar manner, you can calculate 18%. 18% कैलकुलेट करने के लिए पहले 20% कैलकुलेट कर सकते हो. So 20% will be 3000 and 2% is 300. इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20% minus 2% will give you 18%. So 3000 minus 300, that is 2700. Okay, so 2700 will be the answer of this value, right? अब मेरे पास दो नंबर्स आ चुके हैं. I have these two numbers, 1800 एंड 2700. इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है. रेशियो कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक, अमंगल, राइट, यू हैव सिंप्लीफाइड द रेशियो. 6:9 पहले दिया था आंसर, बट आंसर इज 2:3. यू कैन कैंसिल आउट 3 फर्दर. सो 1800 एंड 2700, इन दोनों का रेशियो देखेंगे. सो यहां से 900 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर 2 बचेगा एंड इधर 3 बचेगा. If I'll cancel out 900, the remaining ratio, the simplified ratio is 2:3. Right? Now, friends, this is one way of doing this question. One way. Now, another way. Let's talk about another easier way of doing this, faster way of doing this thing. Okay? Now, one thing you can observe that for both product D and product E, दोनों के लिए हम जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज का बेस सेम है. बेस का मतलब जिस वैल्यू पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, 15,000 दोनों के लिए बेस सेम है. राइट नाउ, इफ द बेस इज सेम, देन यू कैन डू द कैलकुलेशंस ऑन द परसेंटेजेस. डायरेक्टली परसेंटेजेस पे ही कैलकुलेशन कर सकते हो. सो डी के लिए कितना परसेंटेज है? 12%. एंड ई के लिए इट इज 18%. सो अगर मुझे सेल्स ऑफ डी एंड सेल्स ऑफ ई, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, एंड डी और ई के लिए बेस सेम है, तो डायरेक्टली आप क्या करो, ये जो परसेंटेज वैल्यूज हैं इनका रेशियो कैलकुलेट कर लो. आई मीन टू से दैट 12 और 18 का जो भी रेशियो होगा वही फाइनल आंसर होगा. ठीक है, सो यहां पे कंप्लीट वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बेस आर सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स. सो 12 और 18 का रेशियो कैलकुलेट कर लो. This ratio comes out to be 2:3. Okay, and you can do every type of calculation using this method in case the base is same. ठीक है, right? चलिए, now let's look at the next thing, the next question. All of you, what is the total sales of products A, E and D taken together? All right, nice. So once again in this case, आप या तो A, E और D के लिए सेपरेट कैलकुलेशंस कर सकते हो. नाउ तीनों के लिए बेस सेम है,
तो क्या करना चाहिए? A is 15%, E is 18% and D is 12%. तो पहले परसेंटेजेस को ऐड कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यूज सेपरेटली, मैं क्या करूंगा, पहले मैं परसेंटेजेस को ऐड कर लूंगा। 15 प्लस 18 प्लस 12, 15 प्लस 18 प्लस 12, that is equal to 45%, right? So together all three of them, A, E and D, have a percentage share of 45%. ठीक है, अब इनका टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, which will be 45% of 15,000। ठीक है, अब 45% जल्दी से कैलकुलेट करना है, ओरली भी कर सकते हो। तो पहले मैं क्या करूंगा, 50% कैलकुलेट करूंगा। 50% मींस हाफ ऑफ दिस, तो 50% कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 15,000, दैट इज 7,500। सो 50% इज दिस मच। अगर 50% 7,500 है तो 5% कितना हो जाएगा, 750, एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 50% माइनस 5% will give me 45%. 7,500 minus 750 will give me 6,750. तो 6,750 will be your final answer। ठीक है, तो इस टाइप की कैलकुलेशंस के लिए बार बार कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। if you are in practice of doing these calculations, you can do it orally। हाँ, so रुचि मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, बट लुक एट दिस मेथड। इसका 50% 7,500, 50% अगर ये है तो 5% एक जीरो हटा दो, 750 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू जस्ट डू द सब्ट्रैक्शंस। ओके, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आंसर विल बी 6,750। डन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a slightly different but interesting question. The central angle corresponding to product B, central angle, अब इसका मतलब क्या है? ये जो हमने पाई चार्ट बनाया है यहां पे, ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट ए। सो प्रोडक्ट ए का परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ है 15%। अब ये जो पाए बनाए हैं हमने, ये जो सेक्टर्स बनाए हैं, ये पूरे सर्कल को डिवाइड किया है हमने, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट दिस कंप्लीट एंगल, गाइस कैन यू टेल मी, एक सर्कल में कंप्लीट सेंट्रल एंगल, कंप्लीट एंगल कितने डिग्रीज का होता है? एक सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने का होता है? कम ऑन टेल मी। एब्सोल्युटली 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है कि टोटल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? अब इस टोटल एंगल विच इज 360 डिग्रीज, मैं क्या कर सकता हूं, इसको परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता हूं। तो इफ आई लुक एट प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए का सेंट्रल एंगल, प्रोडक्ट ए का सेंट्रल एंगल कितना होगा? इट विल बी 15% ऑफ 360। सो प्रोडक्ट ए, the angle at the center of the circle will be 15% of 360। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 54 डिग्रीज, राइट? सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। ओके, सो क्विकली डू इट फॉर प्रोडक्ट बी एज पर द क्वेश्चन। सो प्रोडक्ट बी के लिए कितना सेंट्रल एंगल होगा, जल्दी से फाइंड आउट कर दो। Absolutely. So what we'll do is we'll calculate 35% of 360। ठीक है, ना 360 का 35% चाहिए। 360 का 10% कितना होता है? 10% is 36। So 30% will be 36 multiplied by 3। Done? 30%, right? So 30% will be 36 multiplied by 3, and then 5%, अगर 10% 36 है तो 5% उसका आधा हो जाएगा, it will be 18।
इन दोनों को ऐड कर दो एंड दैट विल बी योर आंसर. So 36 multiplied 3 is 108. 108 plus 18 is 126. So 126 will be the central angle corresponding to the product B. Product B का central angle इतना हो जाएगा. Right? Very good, Ruchi. Now you have used the method. ठीक है? So 30% will be 10%, which is 36, multiplied by 3. 10% multiplied by 3 will give me 30%, which is 108. 5%, 10% अगर 36 है तो 5% उसका आधा होगा, that is 18. अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है to get your answer. Okay, right? So the answer here is option D, that is 126. Let's move on and look at the last question of this set. Now they have given an additional value, a different thing. They are saying that if the total sales of product D is 1800, then what is the total sales of product A? Nice, very good. So Ruchi, Anu and Mangal, very good. Nice, Ruchi, if you have already calculated the values, great. So if the total sales of product D is 1800, now D क्या है, 12%. So 12% of total sales is given as 1800. ठीक है, 12% of total sales is given as 1800. मैं अभी बताऊंगा कि आपने जो इनिशियल वैल्यूज कैलकुलेट की थी, शायद आपका यहां पे गलत आंसर आ सकता था. सो जस्ट 2 मिनट वेट करो. So 12% of total is given as 1800. So 12 upon 100 multiplied by total is given as 1800. ठीक है? So total का वैल्यू कितना हो जाएगा? It will be 1800 multiplied by 100 divided by 12. And coincidentally, it is coming out to be the same total value which was given earlier. So according to this question, the total remains same. ठीक है, total same है. So total अगर 15,000 है तो product of sales A 15% of total, 15% of 15,000, तो ये कितना आ जाएगा, 2,250. ठीक है, राइट? इतना क्लियर है? परफेक्ट. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा वेरिएशन हो सकता है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी लिखा है व्हाइट कलर से लिखा है, अब ब्लू कलर से मैं वेरिएशन लिख रहा हूं. सो दे मे से दैट इफ द टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट डी इज 3600, not 1800 but 3600, then what will be the total sales of product A? Now the things will change entirely. Okay, so they are saying that if the total sales of product D is 3600, then what will be the total sales of product A? So now the original values that you have will not work anymore, because जो total पहले 15,000 था, इस केस में total different आएगा. ठीक है, right? So रुचि, एक चीज का ध्यान रखना, आपने सारी वैल्यूज पहले कैलकुलेट कर ली थी, बट मेक श्योर दैट यहां पे जो टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट डी है 1800 दिया हुआ है, तो वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू से मैच कर रहा है, तभी आप टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए डायरेक्टली लिख पाओगे. इस केस में अगर मैंने वैल्यू चेंज कर दी, इफ आई से दैट टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट डी इज 3600, सो नाउ यू विल हैव टू रीवर्क ऑन ऑल द वैल्यूज.
सारी वैल्यूज पे रीवर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, ओके। सो टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बी 12%, सो 12% ऑफ टोटल इज 3600। तो यहां से टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा? कैन यू टेल मी, कैन यू ऑल टेल मी, यहां से टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा? If 12% of total is 3600, what will be the sum? Got it, Ruchi? Great, very good. So Akash, yes, your answer is correct, but tell me what will be the total? Total कितना होगा? Total आ जाएगा 30,000, ठीक है? Total comes out to be 30,000. Now product A का sales कितना है? 15%. So 15% of 30,000 will be equal to 4,500. So 4,500 will become the final answer of this question, right? ठीक है? So don't just blindly mark your answer. Please read it carefully. Make sure that the values are matching, and then you can go ahead and mark your answer. All right? Fine. So friends, this is all about the pie charts, right? So the basics, the fundamentals of pie charts was this. Now in the upcoming classes, so since this was the last lecture of the series of foundation, and please don't be upset by thinking that this is the last session. So this is the last session of the foundation series. Now from the next week onwards, we are going to start with a new series wherein we'll be having some advanced level of topics, right? So अब नई series start हो रही है next week से. Do not worry at all. We'll keep on starting new series every week, like every month. Every few weeks we'll be having new series, and this I would say that this series of sessions will continue for all of you, right? So today we'll stop at this point in time. Thank you very much, all of you, for being a part of this session. I'll see you in the next session with a brand new series. Have a good day. Bye-bye.